सो हमने एक फॉर्मूला देखा था कल. In the formula, we had identified few of the errors, sources of error that can be there in the Doppler log, which was हमने सारे errors कर लिए थे क्या? Yes sir. गौतम पीछे गाना बज रहा है, गाना सुनोगे या क्लासरूम में लेक्चर सुनोगे? नहीं सर, क्लासरूम में लेक्चर सुनेंगे. तो गाना बज रहा था पीछे. ओके, ठीक है. सो we'll take a look at the error on the screen itself. Okay, Gautam, did we see it on the screen, the errors? कल की क्लास में नहीं ध्यान है. All right, sharing the screen. मेरे ख्याल से हो तो चुका था. यस सर, हो गया था सर एरर. हो गया था. शिप मोशन के चलते भी when transmission is happening one angle, when reception is happening another angle, so because of that also there can be 0.1% of difference in the error in the displayed speed. That also we had seen, and we did talk about side lobe error as well. We understood what is side lobe. Side lobe is the transmission which is happening on the sides of the main transmission. When I try to, make a beam of the wave, main beam goes in the straight direction, but there are sideways transmission also, which is of lower power. But at certain times, this lower power also reflects very good energy, which is even stronger than the main energy. Because the main thing will be going at a distance and coming back. Meanwhile, the side lobe reflections may be received by the transducer in a better way. So it will start working on that. But the Janus configuration takes care of that to quite an extent, and it minimizes the error due to side lobe also. So we had six errors that we had seen with the Doppler log. First one, propagation error, salinity temperature of the water, error in the transmitted frequency, the oscillator not being stable, जो हमने प्रोसेसर को बताया कि हम इतना ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो हम ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं. Error in the measurement of the received frequency, that can also be a possibility. Transducer angle or orientation at which it is transmitting, what we are giving the input to the processor. Processor basically calculator है, अलग अलग इनपुट मिलती हैं, सबको कैलकुलेट करके रिजल्ट दे देता है. फॉर्मूला जो हमने देखा, तो वही फॉर्मूला प्रोसेसर में भी होगा. So programs are written for the formula कि ये करना है, स्टेप वाइज उसमें फॉर्मूला लिखा होता है. कोडिंग के लैंग्वेज में थोड़ा अलग से लिखा होता है. So measurement in the received frequency, we also saw error due to various motions of the ship, and also during transmission and reception there can be change of angle. So all these were the errors of Doppler log. The last topic that we had discussed was something called calibration of the Doppler log. Now we must understand calibration. What is calibration? आप ये calibration जानेंगे तो ये दूसरे चीजों पे भी applicable होता है. Calibration बहुत जगह होती है, हर चीज में होता है. हर चीज में मतलब क्या होता है? Any measuring device or equipment must be calibrated to give the correct result. What are the measuring devices or equipment? Let us say for example speedometer. सभी लोग, आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, कार चलाते होंगे. आपके सामने एक निडल होता है या डिस्प्ले होता है कि आप 60 किलोमीटर के स्पीड पे चल रहे हैं, 55 चल रहे हैं, 60 चल रहे हैं, 70 चल रहे हैं. That's a measuring device. It is measuring the turn of the wheel. इतना बार व्हील टर्न करेगा तो इतनी दूर पहुंचेगा 1 घंटे में. Now suppose take an example that you are driving at 60 किलोमीटर पर सेकंड. 1 घंटा के लिए पूरा आपने ड्राइव किया. आपने यहाँ पे देख लिया कि मैं यहाँ पे हूँ, अभी इतने पे 60 किलोमीटर का स्पीड है मेरा,
और टाइम स्टार्ट्स नाउ। 60 किलोमीटर के कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहे 1 घंटे तक। कितना दूर आप चले गए? जहां से शुरू किया था वहां से 1 घंटे में कहां पहुंच गए? 60 किलोमीटर दूर सर। 60 kilometer. Very good. How did you know? Because your meter was showing and distance is equal to speed into time. 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, तो 60 into 1 hour, 1 घंटे के लिए चले, distance is equal to speed into time. Remember this, distance is equal to speed into time. लेकिन आप जब मेजरिंग टेप से मेजर करने लगे, you have a measuring tape, when you measured the distance, you came to 58 kilometers, not 60, but 58. So physical distance which you are measuring by the tape is 58 kilometer. Meter आपका बोल रहा था 60, as per the meter you should have done 60 kilometers. But physically when you are measuring, you are getting only 58. So where is the problem? Krishna, where is the problem? Krishna. Yes sir. Where is the problem? Please repeat my question, what I asked. So you asked where is the problem? Where is the problem in what? Yes, Krishna. What was that we were talking about? Doppler log. डॉपलर लॉग, तो डॉपलर लॉग में क्या बात कर रहे थे हम लोग अभी? प्रॉब्लम है किस बारे में पूछ रहा हूँ? Please switch on your camera. Yes, Krishna. What we were discussing about? प्रॉब्लम तो मैंने पूछा, लेकिन प्रॉब्लम किस में, किस केस में? Say something. म्यूटेड है आप, माइक्रोफोन ऑन करो। हाँ सर मेरा नेटवर्क वीक हो गया था, मैं इसलिए क्लियरली सुन नहीं पाया था। आर यू श्योर? यस दिल पे हाथ रख के बोलोगे नेटवर्क खराब था? यस सर। तो आपने रिपीट करने के लिए क्यों नहीं कहा मुझको? अभी तो बात कर रहे हैं। सर रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ शाम को। रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। यस सर। क्या बात है। ऑलराइट अंकित, ठीक है, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। अंकित, अंकित, रमनदीप। सर आप कैलिब्रेशन के बारे में बता रहे थे, लाइक स्पीडोमीटर में प्रॉब्लम है, सो वी हैव टू कैलिब्रेट इट। Okay, so what we discuss is that by meter we have done 60 kilometer, by tape when we are measuring we are getting 58. So what is the problem we are trying to identify? Yes, कहाँ पे प्रॉब्लम है? मोशन में सर। मोशन में? स्पीडोमीटर में सर। स्पीडोमीटर में है ना। स्पीडोमीटर मेरा गलत बता रहा था, मैं चल रहा था एक्चुअली 58, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा बता रहा था, 60 बता रहा था। तो मीटर के हिसाब से तो मैं 60 चला, लेकिन एक्चुअली ऑन द ग्राउंड व्हेन आई एम मूविंग आई हैव डन ओनली 58. So the speedometer was wrong. Another possibility that by measuring tape is wrong, possible or not? यस सर। यस सर। तो possibility कि मेरा tape ही गलत है, that is also a measuring device, but उसमें कम chances होते हैं। measuring device तो हमेशा measure करके चलता है, nonetheless. So we do not have a correct speedometer.
If I wanted correct, what should I have done? The speedometer must be calibrated to give right results. मैंने यहाँ पे थर्मामीटर लगाया, थर्मोमीटर में टेम्परेचर आता है 115 डिग्री, मैं हेल्दी हूँ, ठीक ठाक हूँ, रीडिंग आता है 115 डिग्री, मुझको बुखार है 115 डिग्री का? नहीं सर, नहीं, थर्मामीटर खराब है सर। थर्मामीटर कैलिब्रेशन करना है। थर्मामीटर का कैलिब्रेशन करना है। तो जहाज में भी एक टेम्परेचर मीटर होता है जिसका एनुअल कैलिब्रेशन होता है। प्रेशर एंड टेम्परेचर मीटर एक मास्टर होता है जहाज में, मास्टर टेम्परेचर मीटर एंड प्रेशर मीटर, तो उसको एनुअली कैलिब्रेट करना पड़ता है, वो आपके लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट में भी होगा। और जब सर्विस ड्यू होती है तो हम टेक्नीशियन को बुलाते हैं या जहाज को अपना डिवाइस भेजते हैं शोर पे, वो कैलिब्रेट करते हैं और ला करके यहाँ पे रखते हैं। तो इस मास्टर कैलिब्रेटेड डिवाइस से ही मैं बाकी सब चीजों को मेजर करता हूँ। मेरे पास एक रेफरेंस हो गई कि हाँ ये कैलिब्रेटेड है, शोर सही चीज है, तो मैं बाकी सब डिवाइसेस को इससे मैच करके और अपना काम करता हूँ जहाँ पे प्रेशर चेक करना है। सो व्हेन we are using the Doppler log, that also must be calibrated. That means it should give me the correct speed. Now the Doppler log is supposed to be giving me speed over ground. So this calibration is done in two ways, two steps, or two kinds of calibration are required to complete the process of calibration. First one is called zero calibration, and the other one is scale calibration. The two calibrations which are necessary here is zero calibration, and other one is a scale calibration or something called measured mile calibration. What is zero calibration? That the Doppler log should show zero speed when the ship is actually zero speed. When the ship is not moving, the Doppler log should show zero. अब प्रोसेसर में तो इनपुट्स का पॉसिबिलिटी है, मेरे पास फॉरवर्ड ट्रांसड्यूसर है, हाफ ट्रांसड्यूसर है, पोर्ट ट्रांसड्यूसर है, स्टाबुड ट्रांसड्यूसर है, हमने कुछ सी की वैल्यू दे रखी है, कुछ एफटी की वैल्यू दे रखी। अगर कुछ इसमें इनपुट्स में गड़बड़ होगा तो लॉग दिखा रहा है 0.2 नॉट्स, 0.3 नॉट्स, 0.4 नॉट्स। क्यों दिखा रहा है जबकि हम खड़े हैं? द जीरो कैलिब्रेशन इज डन व्हेन एट जेटी। जहाज खड़ी है, ग्राउंड यहाँ पे है, पानी हो सकता है बहता हो, लेकिन दोनों ग्राउंड के बीच में फिक्स्ड है डिस्टेंस, ये यहाँ से जाके हमेशा वापस आ रहा है यहीं से। नो रिलेटिव मोशन, द सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड aft and forward all stationary, since relative motion is zero. No frequency shift, no frequency shift मतलब v का वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो zero calibration is done at the jetty when the speed of the ship is known to be zero, or at anchor when we are sure that the ship is not drifting at all. When on jetty, the display should read zero. If there is 0.2, 0.3, 0.4 knots showing there, there is some kind of input difference or input errors. कहीं पे error है जिसको calculate करके वो 0.4 knot दिखा रहा है या -0.4 knot दिखा रहा है. So adjustments must be done so that it is showing zero speed when the ship is actually stationary with respect to ground. Another one, next one is measured mile calibration or scale calibration. बोर्ड पे जाएंगे उसके लिए बात करने के लिए. Just one thing. Okay. Board visible?
Yes, sir. थोड़ा ऊपर नीचे Yes. एडजस्ट करने दो। आई थिंक अब पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। Yes, sir. Okay, so what happens? The first one that we talked about is zero calibration. When the ship is at jetty, this calibration is done. The ship is stationary. The reader in the bridge should show 0 degrees, zero speed. Because with respect to jetty, the ship is not moving at all. अगर कुछ difference है, adjustments must be done. Reason for fault should be found out and should be corrected. It is done by the technician, of course. Normally, dry dock में होगा ये, initial time में ही होगा. Second one is scale calibration. What happens in this? This is done during sea trial. What is sea trial? जहाज बन गई, ready हो गई, पानी में उतार दिया. Now the ship is taken for a ride, taken for a swing. जहाज को चला करके, जहाज को ऑपरेट करके, इंजन को चला के जहाज के बारे में बहुत सारे प्रॉपर्टीज को डॉक्यूमेंट करते हैं. उसका मैनोवरिंग कैपेबिलिटीज, स्टॉपिंग डिस्टेंस, टर्निंग सर्किल, डिफरेंट ड्राफ्ट्स, डिफरेंट कंडीशंस में कैसा रिस्पॉन्स है, वो सब डेटा इकट्ठा करते हैं. During that time only the scale calibration is also done. What is done here? So let us say that there is this jetty or the shoreline. There may be a marker on the jetty like this. The distance between them is measured, let us say 1 mile. So on the jetty there are 2 posts, the distance of which is exactly 1 mile. Or alternately there can be buoys which are spaced by same 1 mile. When the ship is coming, the speed is shown in the display. जहाज के डिस्प्ले में कुछ दिखा रहा है 10.6 knots. जब यहाँ पे ये पहुंची, when it is abeam, तो हम टाइम नोट करते हैं. स्पीड तो ये दिखा रहा था, but when the ship is coming here, exactly at that time we note down the time. मान लीजिए ये 10 बज रहा. The ship is continuing. When ship reaches here, when the second buoy is abeam, we also take down the time once more. For example, this much. So when the ship was here, she is this place and this. How much of distance she has already done? 1 mile, sir. 1 mile. And how much time has been taken for doing 1 mile? 6 minutes, sir. 6 minutes. So in 6 minutes, the distance traveled is 1 mile. So in 60 minutes, of course, this will be doing how much? 10 miles. 10 miles. So the speed was this. The distance should be showing the. Remember that this is SDME, speed and distance measuring equipment. Distance में इतना रीड करेगा, speed इतना दिखाना चाहिए था. But are we seeing that speed in the display? That means there is a difference between the actual speed and the displayed speed. हम actually 0.6, sir. yes 0.6 का एरर है, तो फिर से एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं और इसको फिर से राउंड पे लेके जाते हैं. So there is little bit of error allowed. इतना परसेंट एरर हो सकता है, प्लस माइनस इतना नॉट्स हो सकता है, वो अलाउड है थोड़ा सा आईएमओ परफॉर्मेंस में. बट जहाज को 1 या 2 बार या 3 बार रन पे लेके जाते हैं, ट्रायल करते हैं, एंड देन वी मेक दैट स्पीड, that this speed, actual time taken should be what is displayed in the speed. Also the distance done should be recorded by the log correctly. Once these 2 calibrations are done, Doppler log ready for you. You can make use of this Doppler log.
to measure the speed of the ship, either SOG or STW, as we have already discussed. सर इस कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट वगैरह भी होता होगा फिर? यस, एकदम होएगा। जहाज के साथ जब आती है तो हर इक्विपमेंट का सर्टिफिकेट होता है। कितने टाइम का रहता है सर वो कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट? नहीं, वो सर्टिफिकेट का कैलिब्रेशन वैसे अलग से नहीं होगा। कैलिब्रेशन डॉपलर लॉ कैलिब्रेशन जो आप कह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट में, लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स में होगा, वहां पे नहीं होता ये। बट जहाज को जब ये दिया जाता है तो इट इज ऑलरेडी सर्टिफाइड। वो डॉक्यूमेंट्स जो आते हैं ना, इनके मैनुअल्स आते हैं, उन मैनुअल्स में हर हाँ चीज सर। का टाइप सर्टिफिकेट और अप्रूवल्स और ये सब सारा डॉक्यूमेंटेड होता है उनके पूरे वॉल्यूम में ही। ओके, मतलब इसका रिकैलिब्रेशन का जरूरत नहीं रहता है? नहीं, इमीडिएटली नहीं रहता। अगर आप नोट करते हैं, नाउ यू हैव a method of verification of the Doppler log speed on board itself. You can compare it with GPS speed, क्योंकि GPS भी आपको स्पीड ओवर ग्राउंड ही बताता है। यस सर। तो आप उससे और उससे मैच कर सकते हैं। आप जीरो कैलिब्रेशन तो कभी भी चेक कर सकते हैं। आप जेटी पे हैं, आपने देखा जेटी पे कि डॉपलर लॉग ऑन कर दिया, आपने देखा स्पीड कितना है। अगर वो 0 बता रहा है, मतलब जीरो कैलिब्रेशन वाली, तो ठीक ही ठाक है। अगर कुछ स्पीड दिखा रहा है उसमें, फॉरवर्ड स्पीड या आफ्ट स्पीड कुछ भी दिखा रहा है, दैट मींस देयर इज एन एरर इन द जीरो कैलिब्रेशन। एंड ड्यूरिंग सेलिंग टाइम यू कैन सी द स्केल कैलिब्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जीपीएस। सो दोनों में अपने अपने एरर होते हैं, बट दैट विद इन लिमिट्स वी शुड बी ओके। यस, ओके सर। यस सर। तो आपने कैलिब्रेशन कर लिया, डॉपलर लॉग रेडी है, आप घर जाइए या सेलिंग पे निकल जाइए। So thoroughly we are done with the Doppler log. Any questions? Any questions? Just 1 second, please. Yes, gentlemen, any question? नो सर। No. So now shall we begin the next topic? सर एक ये सैटेलाइट स्पीड लॉग भी तो होता है शिप पे? कौन सा? सर सैटेलाइट स्पीड लॉग। सैटेलाइट स्पीड लॉग बेसिकली वही है। अभी जीपीएस में हम लोग पढ़ेंगे कि सैटेलाइट से स्पीड कैसे निकलती है। That will be in the last of the next topic that we are going to discuss. We said GPS will be doing, right? हाँ सर, बट उसका अलग से इक्विपमेंट होता है ना सर? कोई दिक्कत नहीं है, अलग से इक्विपमेंट है तो क्या हुआ, बेसिकली फंक्शन तो वही होगा ना। ऐसे भी जीपीएस में, जीपीएस का मेन काम क्या है? पोजीशन दिखाना, साथ में वो स्पीड भी दिखा देता है, कोर्स भी दिखा देता है। सिमिलर डिवाइस आजकल बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जो सैटेलाइट स्पीड लॉग जो है उसमें बहुत सारा हेडिंग की भी बात हो रही है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर डन nowadays. So take 1 minute break, 2 minutes break, so reset your mind, and then we start the new topic, which is the GPS global positioning system. 2 minutes break for you, just to reset and get out of the Doppler log.